Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now section C, question number 11. Double fertilization is reported in plants of both castor and groundnut. However, the mature seeds of groundnut are non-albuminous and castor are albuminous. Explain the post-fertilization events that are responsible for it. फर्टिलाइजेशन के बाद का कौन सा इवेंट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करता है रिपीटेडली एंड फॉर्म करता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. सेल्स जो हैं इस टिश्यू के, दे आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल. रिजर्व फूड मटेरियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को. In this process, primary endosperm nucleus undergo repeated nuclear division. सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन, मल्टीपल न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे. इसे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. जो एंडोस्पर्म बनेगा आफ्टर न्यूक्लियर डिविजन्स क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन सेल वॉल फॉर्मेशन होगी एंड एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर. बिफोर सीड फॉर्मेशन ये जो एंडोस्पर्म है मे बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो. डेवलपिंग एम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा है वो पूरा कंज्यूम कर ले, लाइक इन केस ऑफ ग्राउंडनट, और मे परसिस्ट इन मैच्योर सीड लाइक castor and be used up during seed germination. This was question number 11.